So, good evening, all of you. Good evening. Good evening, sir. Good evening. This is a special session to celebrate the success of three of my students who have cleared CFA all levels, because CFA Level 3 examinations results came out recently. And out of many students who have cleared, these three are randomly sample picked. And I wanted to discuss the strategies जो इन्होंने अपनाई होगी for the purpose of clearing CFA level 3, and also what's their profile, what are they working, did they do CFA L3 with a job or as full time, how much time they devote to it, ठीक है, and stuff like that. तो ये main discussion है. The agenda is very simple. अगर कोई CFA level 3 first time देने वाला है या फिर अगर कोई repeater student है और struggle कर रहा है, so अगर उसको कुछ insight माने उसको insight मिल सके कि regarding what did these guys do for the purpose of clearing CFA level 3, which others did not, because I think the result was 49%. Yeah. Rounded up to 50%. That means every 1 out of 2 students who appeared for the exam globally have passed. So results cannot be said to be bad from a macro perspective, but we know that individual pain points are there. Still, people might have flunked, and those who have flunked, they might really suffering the pain and would like to see some clarity. So, Darshil, Akash, Radhika, I have never interacted with you all earlier. I think we are interacting for the first time. I would really wish that काश आप उसके बारे में सोचे, वो जो पर्सन प्रिपेयर कर रहा है लेवल 3 या फिर जो पर्सन क्लियर नहीं हुआ, कि as to what guidance you all can provide to that person. That would be my primary agenda. Apart from that, obviously, any personal sharing that you want, that's a ये मेरे को experience मिला CFA में, and this is how my career is going on, and any suggestion that you want from my side personally right now or later on by talking to me, all that is obviously a given. ठीक है? So, and obviously, when did you start your journey and all that, तो एक टच मिलता है, मेरे को समझ में आता है how you evolved into what you think you are right now, and what do you think there's been a change in your personality. If any of you are married, so how did you cope up with CFA program along with marriage, okay, and other things. You can be as open as possible, there is no issue, and there is no time constraint also, and I am not keeping it sequential. Matlab, we can speak in between the way we want. Let it be an interactive session. So Darshil, Akash, Radhika, मेरे को मेरे स्टाफ ने, अमित ने, जिसने अरेंज किया है, केवल ये बताया कि शायद आप लोग तीनों के तीनों सीए स्टूडेंट्स हैं. इज इट? Sir, I cleared. हाँ, I cleared my CA already, sir. हाँ, वही सीए स्टूडेंट से कहने का मतलब था you cleared CA or Yeah, you are yes. presently maybe in CA final or whatever. So Yeah. Akash has cleared CA. Darshil, what about you? Sir, I have also cleared CA. You also cleared CA. And Yeah, Radhika? yes, sir. I also cleared CA, May Okay. 2017. So usually ऐसा होता नहीं है. The sessions which I have, they are generally sessions in which there's an engineering student or a eco honors or a stats honors or a commerce student or a CA student, a combination होता है. Today it's just होता है ना कि even in random sampling sometimes we have concentrated samples. I think people will understand who understand stats well. कि कभी कभी ऐसा concentration हो जाता है कि सारे के सारे qualified chartered accountants हैं जो CFA level 3 clear किए हैं. So I think it's good. So I'll enjoy the session like nobody else. Let's start. So Radhika, would you share your profiling with us? आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कब CA clear किया, कैसे CFA join किया, अभी कहाँ काम कर रहे हैं if you are working, and like how do you think this program is complementing with what you are doing and what you have plans in future, your confidence in some areas or the other, you know, and many other stuff which maybe I'm not able to speak out. Yes. Sure. So I would like to thank you, sir, firstly, for giving my introduction. So a bit louder, because the voice is really very low. Okay. Hello, is it better? Yeah, it is better. Okay. Yeah. So firstly, I would like to thank you, sir. It's very nice. Actually, your
clarity of concepts and everything. I impressed from that. That's why I joined SSCI. So as a part of introduction, I'm chartered accountant and company secretary by profession. I cleared my CA in May 2017. Uh, so thereafter, I joined ICICI Bank for some time, and now after that, I joined KPMG. In KPMG, I am since like 5.5 years, almost done. So there, currently in audit, I joined in audit profession and worked for 5 years in audit. Now I'm in a CFO advisory department. So this is my just Where are you profession. from? I'm from Rajasthan, Jodhpur. Okay. Yeah. So also family perspective, I got married recently, 1 year before, and I joined as a CFA journey. If I tell, I joined CFA in 2019 something. Then after COVID came, so it was skipped for 1.52 years. Thereafter, I cleared CFA level 2. Level 1, level 2, I cleared in first attempt. But level 3, due to I'll not blaming anything that yeah, disturbance comes in everybody's life. But yeah, there was some distractions of marriage and all. So I could not clear in first attempt, but I cleared now. So I'll tell you that I will tell every student that should never fail up. There are always something which we can stand up. So that's why I could clear. So it was level 1 and level 2 I done self-study, and I used to see your videos, sir. So wherever I got stuck, concept clarity, I absolutely I could get from you. So then after only I decided to join CCI Institute. And so my main purpose was getting clarity on the concepts which the CFA Institute is offering. That is most important, which I feel. Because the questions, the revision part and all things giving answer in examination, that is separate thing. But first is getting clarity on the concepts. That is very beautiful actually in CFA Institute. The material, the things that we provide us apart from CA. In CA already we have done something, but CFA is more advanced form of that. Where we get the stock market, what actually fixed income, what like very interesting topics are there. So this is everybody should get clarity on concept. The passing exam is not only important thing, which I feel, because in in first attempt, in first attempt I got very good marks in derivatives, but not in ethics and all this stuff. So there I felt that everything we should have a clarity and we should have a power to give the decision and everything. Then I applied this thing in my second attempt and I got cleared. So, from study candidate resources perspective, which I got from sir is basically get first do SSCI's lectures in a very disciplined manner, and once it is done, we get confidence that yeah, we know everything. But the implication is obviously practice of the questions, which sir always tells. So I done SSCI material 2 times. Then after I done candidate resources of CFA Institute and question that I also revised 2 times. So at least 3 time revision of the questions which you have done first time is very important thing and very key to success actually. Revision is always uh, and then mock test papers. So once it is done, we can say that we know everything, at least for passing the exam. But for mock test is main because their time span is very limited. So maybe we know the stuff, but we can't give the answer at that point of time. And it is also like computer based examination, which is also different thing. In past we used to do on the paper and all that. So that's why I tried to give on the laptop only the answers and all these stuff on the mock test papers which CFA Institute offered. So ones which we are currently giving the attempt that we should do. Apart from that, other if your friends have the mock test papers of last 2 attempts, 2 years, that also should do in a very exam oriented manner. 3 hours we should give to 4 hours basically. 4 hours we should give basically to that examination only. That we should treat it as a real exam. So that is important and that gives the flavor, confidence to give the real exam. So yeah, this I will tell you. Radhika, what I feel is that
I think when you did not clear CFA level 1 and CFA level 3 in the first attempt, that must have been the first red mark in your academic career. Yeah. Is it? Yeah. Yeah. So what I can understand is that that pain was so strong that you did not require anybody's help after that, because then the challenge that comes and the effort and the dedication, the sincerity, and when you are reading, that focus which comes, the depth when you are preparing, that is unparalleled. So that's what happened. uh, it is good that uh, अरे वैसे तो it would not have happened तो सबसे best होता, but if it had to happen, then it happened at the time when your personal life was going through this, so that at least you can give yourself some excuse, okay, कि भाई ऐसा था. Because कभी कभी क्या होता है, otherwise people like you who have been so academically brilliant tend to really criticize oneself a lot, and that can really pull you down. तो मेरे को लगता है कि ये उस सेंस में यू मस्ट हैव इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. एंड प्लस होता है ना लास्ट में अंत भला तो सब भला. यू मस्ट हैव आल्सो फेल्ट दैट एज अ रिजल्ट ऑफ योर सेकंड टाइम एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द सीएफए लेवल 3 कंटेंट, उसका जो एब्जॉर्प्शन है जो आपके अंदर हुआ और जो मटेरियल है वो बेटर इम्बाइब हुआ होगा. अब वो उस तरह तो रियल लाइफ में काम आता नहीं क्वेश्चन आंसर, बट अपने अंदर में जो रह जाता है वो अपने आप ही, खासकर यू आर मूविंग इनटू द एडवाइजरी रोल, आप केपीएमजी में भी हैं और भी फ्यूचर में जाके, तो जो मैक्रो पर्सपेक्टिव सीएफए प्रोग्राम में है, कई बार सीए में we tend to be more micro, माने firm specific decisions and not keeping in regard the macro decisions, the data implications and all that. उन सब का respect in your personality while taking decisions, I think they improve a lot. Am I correct? Yeah, agree with you. And one thing more is the mentor and family support. So which I got, which made me to give second exam was my family support. My brother was so strong and he motivated me. That only I can give credit. And yours, actually, your motivation and your concept clarity always impresses me. So this is the I thing. can vouch 100 times on your better half, as you are saying, because he must have seen that आप किसी चीज में fail नहीं कर सकते हो, impossible है. Okay, looking at your personality, so therefore he was damn sure that जो हुआ है उसमें उनका contribution था, not deliberately, not that way. Not tell that, Yeah, but yeah. I can just tell that there can be some distraction which comes where we can't control things and we unfortunately fell. But always distractions come and we need to cope up with that. Unfortunately, sometimes happens that we could not clear it. But yeah, this is not the end actually. Okay. Radhika, आपने जो mock test है, you took the mock test primarily of the CFA Institute, ना? Yeah. As also some other vendors? No, so only that Swagger also Swagger I read actually. हाँ. So Swagger का mock test होता है practice questions वाला वो किया था. हाँ. And your institute का जो current आता है examination का वो देता है respective attempt के लिए. वो ठीक है. तो मेरे किया को ही था. एक बार विदाउट आस्किंग आकाश एंड दर्शिल, मतलब आप लोग का वैसे प्रोफाइलिंग नहीं हुआ है, बट बिफोर दैट तीनों से ही पूछ रहा हूँ. सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ जो कि 2 अटेम्प्ट से सीएफए लेवल 3 दे रहा हूँ और मैं क्लियर नहीं किया हूँ. आई हैव फेल्ड बोथ द अटेम्प्ट्स. आई हैड क्लियर्ड माय लेवल 1 लेवल 2 वन शॉट, ठीक है, बट लेवल 3 मेरे को 2 अटेम्प्ट हो गए, मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ. और मैं संजय सर के पास टेलीग्राम पे या जो भी है उनको ये बोलता हूँ कि सर, I did the entire SSCI classes. I did the questions from there. I did the core readings, end of chapter questions, examples from core. I did the candidate resources twice. I did everything. Still, the questions that came in the exam were totally different. Now, believe me, as Sanjay sir, I am not able to equate the theorem. होते ना, 2 + 2 is equal to 4, मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहे. तो कोई स्टूडेंट ने मेरे को ऐसा लिखा, माने of course, but you know, I am not able to get it because obviously exam papers cannot be discussed by us कि क्या आया था क्या नहीं आया था, but principally क्या एग्जाम में जो आया था, ओके, वो और जो कैंडिडेट रिसोर्सेज में और कोर रीडिंग्स में आपने किया, क्या वो डायगोनली ऑपोजिट था? आई वुड लाइक टू आस्क ऑल ऑफ यू. Sir, can I start if you या don't प्लीज mind? प्लीज.
प्लीज. तो सर मैं आई क्लियर्ड सी आफ्टर 4 attempts, राइट? सो फेलियर का दर्द बहुत ज्यादा ही था कुछ. यू आई हैड किल्ड माय कॉन्फिडेंस टू अ वेरी ग्रेट लेवल. सो व्हाट डिड यू क्लियर इन 4 attempts? सीए फाइनल 4 attempts लगा था और मुझे. सीए फाइनल आप 4th attempt में क्लियर किए, ठीक ये है, ओके. सर, क्योंकि सेकंड थर्ड अटेम्प्ट मेरा 3 मार्क और 6 मार्क से छूट गया था, वो ठीक इतना है, क्लोज मार्जिन. ठीक है. एंड सर, इफ यू रिमेम्बर, मेरा सीए फाइनल के वक्त भी मैंने आपको कॉल किया था, एंड सीएफए लेवल 3 के वक्त भी. सो हम्म. राइट फ्रॉम सीएफए लेवल 1 मैंने सिर्फ आपके लेक्चर्स, whatever sums you had in your own material, SSCI material, और जहाँ मुझे इंटरेस्ट रहता था, आई वुड रेफर टू द स्टडी मटेरियल ऑफ द इंस्टीट्यूट. एंड जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट था वाज रीडिंग द एक्सप्लेनेशन टू ऑल द आंसर्स. हम्म. एंड उसमें से जो भी आपका बुक में रहता था, आई वुड लीव दैट, और जो एडिशनल पॉइंट्स मुझे लगता था कि दैट दिस हैज एनरिच्ड माय नॉलेज, आई यूज्ड टू अंडरलाइन. हम्म. और फिर वो सारे सेट ऑफ क्वेश्चंस में से जो मुझे लगता था दिस इज इम्पोर्टेंट और दिस इज समथिंग आई कुडंट क्लिक इन फर्स्ट टाइम, आई यूज्ड टू स्टडी इट इन माय फर्दर रिविजन्स. मैंने ये सिर्फ ये दो ही चीज किया. एंड आई एम टेलिंग यू दिस सर, क्वेश्चंस जो भी आए ना एग्जाम में, आई थिंक 99.99% आपने कवर किया है वो सब. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर. हम्म. बिकॉज दूसरा क्या है सर, आपने अभी भी एक टेलीग्राम पे वीडियो डाला था. इट्स अबाउट एंजॉइंग द प्रोसेस, नॉट थिंकिंग टू मच अबाउट द एंड पार्ट सर. सीएफए बनना मेरा कभी टारगेट था ही नहीं सर. इट वाज जस्ट अबाउट एंजॉइंग द प्रोसेस, क्योंकि सीए में काफी हद तक मैंने वो मिस किया था. तो थ्रू आउट सीएफए आई एम टेलिंग यू सर, आई हैव एंजॉयड इट अ लॉट. और मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ही ध्यान दिया और कुछ नहीं किया सर. ओके, आई विल कम बैक टू यू आकाश. श्योर मेरा सर. सिंस क्वेश्चन था कि क्या एग्जाम में जो आया था वो डिफरेंट था कंपेयर्ड टू द कैंडिडेट रिसोर्सेज एंड कोर. राधिका. No, sir. So this is not different. This was concepts were there only, which we have already been taught in the institute. But thing is only the mock test paper, if you solve it, you get the flavor that how the questions are getting asked. So and how to give it in this limited span of time. So that was not different. It actually concepts are all same. Got it. And Darshil. Yes, sir. Even I had shared a similar experience to what Radhika and Akash are saying. Doing the blue box questions, which you always recommend, the chapter end questions from core, and definitely, sir, your material, and especially when you sir dictate something during lectures. So what I tend to do is I used to go back and refer that a lot because those were handwritten notes. So personally, sir, that has been a great help because lot of questions would get covered, a lot of concepts would get covered from there. So and the mock test obviously, so the mock tests the what institute gave us that actually helped me bring the entire course together. I could relate with the mock test and the exams also. Okay, हाँ sir ने ये पढ़ाया था, this is from this part of derivatives or something like that. So comprehensively sir, three things, if your lectures, the blue box questions, chapter end questions, and mock test. I think that should be enough for any student across any level. To be honest, sir, even Okay, okay. so, I did As a my as a teacher, let me re-emphasize to anyone who listens to this that one big takeaway is that mock tests देने से बहुत transformational advantage होगा. I was looking out for the word transformational advantage in the sense that काफी बार I have seen something. I'm sharing my experience that level 2 में भी ऐसा होता है और level 3 में significantly ऐसा होता है कि when we have lost touch with a particular topic, okay, suppose अपने total 6 months में CFA level 3 पढ़े या फिर 12 months में, and हमने से fixed income 2-2.5 महीने पहले पढ़ा था, okay, अभी जहां खड़े वहां से, और अब अचानक से अपने को एक बार लग रहा है कुछ भी याद नहीं है, मतलब पूरा ब्लैंक, कोई चैप्टर खोल रहे हैं तो टोटल. This is so much happening in level 2 and level 3, especially in level 3 where the stuff is qualitative and applicative. ठीक है, बिकॉज अपने अपने आप को जज कैसे करते हैं बाय द, मेरे सेंस अपना सबका इंडियन एजुकेशन सिस्टम और आप लोग का तो सीए, तो इन दैट केस क्या होता है, अपना जजमेंट अप्रेजल होता है बेस्ड ऑन कैन वी एग्जैक्टली रिकॉल व्हाट इज रिटन ओवर देयर, और वो रिकॉल हो नहीं पाते जो वहां लिखा हुआ है, वो तो कोई हालत में नहीं होगा. तो अपने अंदर ही अंदर एक डिफिडेंस आता है कि यार मेरे को तो याद ही नहीं है, देख कितना सारा स्टफ है, कितने सारे पॉइंट्स है. हाउएवर एज सून एज यू गो टू द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट, कि चल क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है,
और क्वेश्चन देख के कुछ आइडिया आया, उसके बेसिस पे आंसर रीड करते हैं, जो आकाश ने बोला, आंसर रीड करके उसके अंदर टाइम स्पेंड करते हैं, अपने जो सोचे थे और जो रीड करके देखा उसमें डिफरेंस कहाँ, क्या सोच है क्या नहीं है, आकाश ने बोला, फिर उसका एक्स्ट्रा नोट बनाना। ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, मैंने कई बार रिटरेट किया है कि इससे बेटर लर्निंग हो नहीं सकता है। बिकॉज Right. आप कोर लेके पढ़ने बैठोगे ना, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 6 पेज तक एफिशिएंसी रह जाएगा, बट उसके Right. बाद आपको लगेगा वो 6 पेज आपको ध्यान नहीं है। बिकॉज इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो 6 पेज याद रखने का मतलब क्या आपको एग्जैक्टली याद है क्या, ये अपने मन में बचपन से बैठाया हुआ है। बचपन में क्या होता था, वी यूज टू लर्न मग अप समथिंग, मम्मी या जो भी है बैठी है, बोले बेटा बोलो, अपने बोल रहे हैं, मम्मी पढ़ रही, नहीं तुमने ये गलती पढ़ा, इज इट इट नॉट? नो Right. मैटर कितना भी डिमीनिंग लगे, ये अपनी पढ़ाई की पद्धति और सिस्टम रहा है, खासकर थियरी में। प्रैक्टिकल में तो खैर अपने माइल्स अपार्ट है, बट थियरी में तो ये मापदंड रहा है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी बैड वे ऑफ स्टडिंग फॉर द सीएफए प्रोग्राम, बिकॉज यू विल नेवर एबल टू रिप्रोड्यूस द कोर। कोर का पॉइंट्स कोर का अंदर का आप कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। एज अ टीचर मेरे को काफी डर लगता था सीएफए लेवल 3 को रिप्रोड्यूस करने में। तो मैं, आपको याद होगा, कुछ कुछ टॉपिक्स में स्टिकी नोट्स बनाता था, Right, sir. ध्यान है? Yes, कुछ sir. कुछ Yes, टॉपिक्स sir. में, बिकॉज व्हेन आई वाज स्टडिंग सपोज 60 पेजेस 70 पेजेस ऑफ एसेट एलोकेशन, ठीक है, Hmm. तो मेरे को पता है वो जो बोल रहा है मैं अपने तरफ से बढ़िया बोल सकता हूँ, फिर भी क्या पता कोई और तरीके से पूछ ले वो। मैं पैराग्राफ बाई पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ, नींद आ रही है, कॉफी या चाय कुछ पी रहा हूँ, फिर वापस सेकंड पैरा में जा रहा हूँ, ठीक है, तो एंड आई एम मेकिंग स्टिकी नोट्स एट द साइड, आई एम टेलिंग यू, बड़े इट हैज हैपेंड। एसेट एलोकेशन वाला टॉपिक जो है ना, उसमें बता रहा हूँ, मेरे को 1.5 महीना लगा होगा एक चैप्टर करने में, 1.5 महीना। दैट टाइम आई डोंट मीन दैट 1.5 महीने तक मैं वो वही कर रहा था, लाइफ में कुछ नहीं था, बट वापस से उसको पकड़ना पेज 1 से, वापस से बैठाना, उस स्टोरी को बैठाना कि मैं उसको एक पोएट्री कैसे मैंने इम्बाइब कर पाऊं, चलते हुए सोचना, बैठते हुए सोचना, वॉक करते हुए सोचना, यू नो। अरे पीपल में फाइंड इट स्ट्रेंज, बट द पॉइंट इज दैट अगर वो बसा ही नहीं मन में तो डिलीवरी कैसे होगा? इट कैनॉट हैपन दैट मैं 4 पॉइंट पढ़ के बैठ गया हूँ क्लास पढ़ाने and I will repeat the 4 points. You know, if you have studied with me, it never happens with me that way. I just change the chapter totally and I deliver it in a different manner. मेरे को भी नहीं पता होता है कि मैं कैसे डिलीवर करने वाला हूँ, तो मेरे को ये फीलिंग हो जाता है कि अब ये गया अंदर, अब ये डिलीवर हो सकता है। सो आई थिंक मैंने वो जो आकाश ने पॉइंट बोला ना कि क्वेश्चन के आंसर्स को रीड करके, और लेवल 1 में हमने कितना किया था, लेवल 1 में आई रिमेम्बर जब अपने क्वेश्चंस करते थे, उस क्वेश्चन में जब भी एक्स्ट्रा आता था मैं उस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाई देता था कि ये पॉइंट लिख Yes. लो, और ऐसे Absolutely. करके चैप्टर के एंड में करीब 25-50 एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाते थे, ठीक है, तो और अगर बंदा वो पॉइंट्स रीड कर ले, धन्य हो गया। So this is a message to all those people. In fact, at the risk of saying this, but then when I start speaking, I'm very transparent and I feel truth is something which comes out with the most passion. बाकी बनावटी होता है। तो मेरे जो पार्टनर है यूलर्न में, विवेक महेश्वरी, ओके, ही इज मल्टीपल क्वालिफाइड, ओके, मतलब मोर क्वालिफाइड देन आई एम, बिकॉज मेरे पास जो डिग्रीज है वो तो है ही, उसके अलावा सीए भी है, उसके अलावा उन्होंने एमबीए भी किया है, ठीक है, तो मैंने मल्टीपल क्वालिफाइड एंड वर्क 10 years in Jubilant and then worked in this और एक ऑडिट फर्म में काम किया है। वो सब चीज मेरे से पढ़े हुए, A to Z एवरीथिंग, मतलब, और वो तो सामने सामने बैठ के, गोदी में बैठ के, वैसा वाला बात है, ठीक है, जस्ट 1 year 2 year junior to me. And when he was going to appear for CFA level 3, that time he left Calcutta, और उस समय तो ये वर्चुअल मोड था नहीं, बंदा लेवल 3 एक बार लटका, 2 बार लटका, 3 बार लटका, देन ही शिफ्टेड टू कैलकाटा एंड देन ही वाज एबल टू टेक माय क्लासेस, बिकॉज उस समय क्लासेस तो ऐसे ही होती थी ना, फेस टू फेस, एंड देन वो क्लियर किया। आई एम नॉट सेइंग मेरे कारण क्लियर किया, बट पता नहीं जो खुलना होता है ना, कोई टॉपिक का खुलना, वो अगला कोर को बहुत फॉलो करता है। विवेक इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट कोर, बट पता नहीं कोर का जो फॉर्मेलिटी है, जैसे अभी इन्होंने सीएफए इंस्टीट्यूट ने, आप लोग को पता ही होगा, पीएसएम चालू किया, प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल। If you have some Yes. juniors, कोई friend of yours in level 1 or level 2, and you ask them about the PSM, it is rock boring. The way in which financial modeling is being taught over there, nobody is able to sustain it. उसको ले कैसे? मैंने बात क्वालिटी और मटेरियल का नहीं, अगला कैसे करा रहा है यार। तो प्रॉब्लम ये है कि अपने अपने स्टाइल में नहीं उतरेंगे ना तो होगा नहीं।
तो अपने को सबको अपना मैंने इंटरेस्ट देखना चाहिए, कैसे पढ़ने में मजा आ रहा है। और मेरे को राधिका, आपने जो बार बार रेट किया ना, मतलब हम लोग तो एज ए टीचर कभी कभी वॉइस के पिच को ऊपर नीचे ले जाते हैं, बट ऑब्वियसली यू आर नॉट एन आर्टिकुलेटर, बट द नंबर ऑफ टाइम्स यू हैव आर्टिकुलेटेड अबाउट द मॉक टेस्ट, मतलब if somebody is really going to listen that mock test किसी का भी प्रेपरेशन को कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसमें लिमिट नहीं है। एंड मेरे को लगता है अगर कोई एक मॉक टेस्ट में ही 1 दिन या 1.5 दिन स्पेंड कर दे उसको एनालाइज करने में, आगे पीछे उसके हेल्प से चैप्टर में जाने में, चैप्टर में क्या सीखा था, क्या आया एक्स्ट्रा, क्या है चैप्टर में और क्या आ सकता है, मैंने उसको पूरा का पूरा रगड़ देना एक मॉक टेस्ट के हेल्प से, तो कितना ज्यादा उसका डेप्थ हो जाए। मैंने डेप्थ वाला वो वाला हुआ जो बस गया अंदर, जो बोल नहीं सकते हैं और वो अंदर चला गया, that could not be said. तो when they said concept, some listeners feel that या ये लोग क्या बोल रहे थे, केवल concept बोल रहे थे। तो कैसे वो लोग वर्ड्स में डाले उस चीज को कि the internalization of the matter. Okay, so but I am speaking so passionately because जब मैंने वो मैसेज देखा उस स्टूडेंट का, तो I really felt that क्या प्रॉब्लम हो रही है। एक चीज जरूर है कि CFA लेवल 3 में आके मैं लेवल 1 लेवल 2 जैसा स्पून फीडिंग नहीं करता हूं। व्हाट आई डू इज दैट जब मैंने डायरेक्शन दे दिया है चैप्टर का, ठीक है, कि भाई ये है ऑथर ने ये बोला है, वो बोला है, ये बोला है, वो बोला है, उसके बाद जैसे ये क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें आज आप लेवल 3 करके इंडस्ट्री में जाओगे, यू कैनॉट ऑलवेज फील दैट ना कोई आपके बगल में बैठ के एक एक स्टेप आपको ऐसे स्पून फीडिंग करता रहेगा जैसे L1 L2 में होता है। तो L3 में वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि यार आपको पता चल गया, अब आप इसको पिकअप करोगे, ठीक है। तो आई रिमेंबर वन ऑफ माई स्टूडेंट्स बुद्धदित्य, यू मस्ट हैव हर्ड द नेम, जो मेरे साथ टीचर असिस्टेंट का भी रोल प्ले किया, अभी भी इस सेशन के पहले ही जस्ट कम टू मीट मी, पहला बैशाख है ना, न्यू ईयर बंगालीज का, पीरियड कम विद स्वीट्स एंड ऑल दैट। सो मैंने he was discussing with me some valuation of Bharat Electronics, you know, one of the companies trading at a very high P ratio. It's a defense में company है, तो he was discussing with me. So what I mean to say is that वो person, he said something to me after 6 or 8 months of spending time with me कि सर अब मेरे को पढ़ना आ गया है, ठीक है, और कुछ आया या नहीं आया, अब एनीथिंग इन द वर्ल्ड आई कैन ओपन इट आउट। बिकॉज हम लोग क्या करते थे, कोई चैप्टर अगर स्टार्टिंग से नहीं खुल रहा है तो एंड से खोलते थे, एंड से नहीं खुल रहा है तो समरी से खोलते थे, समरी से नहीं खुलता है तो क्वेश्चन से खोलते थे, ठीक है। मतलब वो चैप्टर कहीं ना कहीं से तो वो पेज खुलेगा ही ना जहां से इंटरेस्ट भी आए, बिकॉज इंटरेस्ट अगर नहीं आया तो आई थिंक स्टडीज बिकम्स अ वेरी वेरी मोनोटोनस एंड वेरी पेनफुल अफेयर, मतलब इट्स बिकम्स अ क्या बोले वैसा हो जाता था। तो वो इंटरेस्ट आना ही चाहिए, चाहे वो एथिक्स हो चाहे जो भी हो, और वो इंटरेस्ट लाने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा तरह तरह से उसको ट्राई करके। आपको लगता है स्क्वाइजर बढ़िया, किसी को लगता है कोई बात नहीं है, स्क्वाइजर से इंटरेस्ट लाके खोल, जहां बोरिंग लगा शिफ्ट हो जा कोर में, वो पार्ट कोर से खोल ले, सर का वीडियो सुन ले, किसी और का सुन ले, चैट जीपीटी से पूछ ले कि भाई इसका कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर दे, व्हाट इज द इश्यू। इट हैज टू बी ओपन फ्रॉम समवेयर, बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, क्या मेरे को मजा आ रहा है क्या, अगर मजा नहीं आ रहा है सीएफए जैसे कोर्स में, तो यार आपको चेंज करना चाहिए पैटर्न, टॉपिक चेंज करना चाहिए, चैप्टर चेंज करना चाहिए, ठीक है, तरीका चेंज करना चाहिए, चैट जीपीटी में डाल दो, बोलो भाई इससे 20 क्वेश्चन बना, ओके, मल्टीपल चॉइस, वही ट्राई कर लेते हैं, कुछ ना कुछ, फिर चैट जीपीटी गलती आंसर बनाएगा उसका, वो पता चलेगा, खुशी होगा कि देख गलती बनाया वो, there are many ways. So that's what I have learned, to be as much interactive as possible. One Yes. thing. Radhika, you Oh, are speaking something, yeah. बोलिए. yeah. Can you hear me? Yeah. Yeah. So I just one thing which was important I want to highlight is SSCI QForum. So that also helped me a lot because wherever I struggled, I could get the answers in 1 2 days. So there I could not pile up the things which I can go wrong in exams. And when I normally used to see the like other students who are posting the questions there. So there I could get the flavor which I had must not have read that, but I could get the flavor that I can also go wrong or I must not have a like I may have confusion in future. So that was also everybody should consider. If you are not having question also, you should see the question in a free time. So it's also मतलब खासकर जो 21-22 का क्यू फोरम का आर्काइव है ना, 2021-22 का, किसी को लगेगा ओल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड,
उसमें कुछ कुछ आंसर्स जो दिए हुए हैं मेरे, उस समय तो चैट जीपीटी भी नहीं था जिससे ड्राफ्टिंग हो सके। 1.5 पेज के 2 पेज के आंसर ड्राफ्टेड है, कभी ऑडियो में कभी लिखे हुए। मतलब ऐसा होता था ना, कभी 6-6 घंटे बैठे क्यू फोरम में और जवाब पे जवाब देते जा रहे तीनों लेवल का। ओके, लग रहा है सुबह से रात तक क्यू फोरम हो गए। ऑफ कोर्स अभी उतना टाइम नहीं मिल पाता है क्यू फोरम पे, ठीक है। बट पहले का जो 21-22 का जो क्वालिटी ऑफ रिप्लाईज है, ओके, मेनी टाइम्स आई यूज टू टेल बुद्धादित्य कि ये रिप्लाई करना है, एंड देन ही यूज टू ड्राफ्ट द एंटायर थिंग। बट इट्स गुड यू मेंशन द सेम। और अगर मैंने रिप्लाई नहीं भी किया, कोई और स्टूडेंट रिप्लाई करेगा। इट इज गुड टू रिप्लाई ईच अदर्स डाउट्स। Correct. आकाश, यस सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? तो सर मैं डैड के साथ ही रहता था यहाँ ऑफिस पे, बिकॉज कहाँ पे? अगर नवी मुंबई सर, पनवेल। ओ, नवी मुंबई। यस सर। ओके। तो ट्रैवलिंग ज़्यादा होता था, तो आई डिडंट टेक अप अ प्रॉपर जॉब एज सच, बट डैड के साथ रहता था एंड स्टार्टेड सीएफए अलॉन्ग विद प्रोफेशनल साइकिलिंग। तो वो बाकी सब चीज़ों ने भी हेल्प किया सीएफए करते वक्त सब। एंड सर आई एब्सोल्युटली अग्री विद राधिका जी, जो उन्होंने कहा मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहिए था। एक्चुअली मैंने तो नहीं दिया था सर, वो मेरा गलती था, और मैं आपके माध्यम से सभी स्टूडेंट्स को बोलूंगा नॉट टू रिपीट दैट मिस्टेक। मेरे को बट लगता है पहले बता दूं, आकाश का कुछ इमोशनल मैसेजेस था मेरी तरफ, यस परसों यस तरसों मैंने देखा था। तो यस। आकाश सुपर सुपर बायस्ड है मेरी तरफ। ही इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट। आई थिंक एक नहीं नहीं। जनरल स्टूडेंट को उतना बायस्ड नहीं होना चाहिए किसी के प्रति। सो देयरफॉर क्या होता है, अगर कोई ज्यादा बायस्ड हो जाता है ना, तो ही कैन एक्सट्रैक्ट मोर आउट ऑफ द टीचर एज कंपेयर टू व्हाट द टीचर इज वांटिंग टू टीच। समटाइम्स इट हैपेंस, होता है ना। तो आकाश को वो बेनिफिट मिल गई होगी। इट may not happen with many others. Radhika is a proper representative या student who is या giving a correct judgment. ठीक है, yes, सॉरी आकाश। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सर सर ये क्या होता है पता था, आई हैव बीन थ्रू दैट सीए जर्नी ना। मैं हमेशा अपना सीएफए को सीए से ही रिलेट करता था। इतना खराब एग्जाम एनवायरनमेंट सर, फैन नहीं चलता था, कोई पूछता नहीं था। और यहाँ सीएफए में तो एसी चालू है सर, पीपल आर सेइंग गुड मॉर्निंग, सो वहाँ एग्जाम का स्ट्रेस उतर जाता था सर। एंड फिर योर माइंड स्टार्ट्स टू वर्क कि भाई क्या कंसेप्ट है। एंड सर मैं एक पॉइंट और बोलना चाहता था, बिकॉज आई वॉज विद डैड, आई हैड द लग्जरी ऑफ टाइम टू डिवोट टू स्टडी। सो एवरी डे 4-4.5 आवर्स का लेक्चर्स, एंड इमीडिएटली उसके बाद रिव्यू लेक्चर्स, लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 का जहां भी। फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व करना, वो क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंटरेस्टिंग वाज रीडिंग द बैक साइड ऑफ द आंसर, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। आई जस्ट डिड दैट सर। और वो क्या बोलते हैं, एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस, मॉक कैंडिडेट रिसोर्स भी मैंने नहीं किया था सर। दैट्स अगेन अ मिस्टेक दैट पीपल शुड नॉट रिपीट। बट जो मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स रहता था ना सर, रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, एंड लेवल 2 में आपने क्वेश्चन से पहले एग्जाम्पल्स रहता था, वो करके मैंने सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे और कुछ नहीं किया था सर। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज योर कवरेज इज कॉम्प्रिहेंसिव, दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल। you need to do mock test, you need to refer candidate resource, that's for sure. बट और हाँ सर, एथिक्स के केस में लेवल 1 में आपने जो सिखाया था ना, मैंने एक एक क्वेश्चन को बराबर से किया था, उसमें से कौन सा मेरे आंसर से बेटर था, और अगर नहीं बेटर है तो क्या रीजन रहता था। तो वो उसको मैंने बहुत अच्छे से किया था लेवल 1 में, वही लेवल 2 लेवल 3 में कैरी किया। आई डेंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज, इफ यू एंजॉय कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो आधा टेंशन उधर ही कम हो जाता है। ये बात अलग है कि सर लेवल 3 में आई हैड अ ब्रेक डाउन एंड आई हैड कॉन्टेक्टेड यू, मैं तो डेफर करने वाला था इफ यू रिमेम्बर सर। लेकिन आपने बोला कि सिंस आप लेवल 1 लेवल 2 निकल गए हो, तो देर इज नो पॉइंट इन यू डेफरिंग द एग्जाम एंड पेइंग एक्स्ट्रा सम। तो जब रिजल्ट आया था, खुशी इस बात का ही था, पैसा बच गया सर एक अटेम्प्ट। आपके डैड का क्या बिजनेस है? So he is a life insurance advisor with LIC for the last 20 years. ओके। तो इवन वो जो क्वेश्चंस पूछते थे ना क्लाइंट्स विद रिगार्ड्स टू डेट मार्केट्स, वो बार बार मुझे आपके ही मटेरियल पे लेके जाता था। मतलब जनरली मैंने ऐसे सुना है, जनरली आई मे बी रॉन्ग सर, बट जनरली ऐसा सुना है कि लोगों को फिक्स्ड इनकम में थोड़ा डर लगता है, फिक्स्ड इनकम में। वो मेरा सबसे फेवरेट था। जब भी बोर होता था मैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, मैं उसी पे उतर जाता था पहले। Very good. The good thing is that the fixed income markets in India is going to explode, believe me. ठीक है। Yes, And your dad is in life insurance advisory for so many years, 30 yes, 40 years he has given.
ठीक है. So सर वैसे आप कभी भी बात करोगे ना, वो जो बोलते हैं ना रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के हिसाब से, यू फाइंड दैट इट इज रिटन इम्प्लिसिटली इन द सीएफए मटेरियल आल्सो. तो वहां से एक और चीज पता चलता है कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है जितना आप थ्योरी पढ़ते हो. बट हाँ, यस, मैं बहुत मैं जन हाँ, बहुत जन ब्रश असाइड कर देते हैं कि क्या है, अल्टीमेटली किताबी ज्ञान है. बट वी हाँ हु आर सर, डूइंग सीएफए प्रोग्राम कैन अंडरस्टैंड दैट अगर आप किताबी ज्ञान को प्रॉपरली ले रहे हो, तो उसमें इनफैक्ट वहां का भी ज्ञान है जहां पे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जाने वाला है फ्यूचर में. करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट. एंड कैसा होता था ना सर, आपको याद है सीए फाइनल में काफी क्वेश्चंस एम्बिग्यूअस रहते थे. हाँ आप यार, रोज ही तो वीडियो आता है उसका. हाँ. हाँ सर, मतलब यहाँ कोई एम्बिग्यूटी नहीं था सर. एग्जाम हॉल भी आपके क्या आपको मेहमान की तरह इनवाइट कर रहे हैं, दे आर लुकिंग आफ्टर यू. सो वहाँ स्ट्रेस खत्म होता था. व्हाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि पीपल शुड नो दैट इंटरनेशनल एग्जाम्स आर मच लेस स्ट्रेसफुल एज कम्पेयर टू इंडियन एग्जाम्स. और वो चीज अगर आप अपने मन में रखो टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम, आई थिंक वहां आपका स्ट्रेस कम हो जाता है सर. ये मेरा टेक है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट. एंड हाँ, आई एम मतलब what happens is that, see, the money involved in taking an exam in international, that money involved actually builds up the pressures. राइट सर, राइट Okay, राइट. actually that's what I think happens. Apart हम्म. from the emotional connect and the fact that अगर नहीं clear हुए तो मतलब all those things come in, and they, I think, people like when MS Dhoni, who spoke so much nicely about, think about the controllables rather than the outcome. Yes, yes, ठीक yes. है, तो that was मेरा superb. मेरा मेरा टेंशन हमेशा यही रहता था सर, मैं कितना प्रिपेयर कर पाया कितना नहीं. एंड इनफैक्ट लेवल 3 के वक्त मैंने जिस दिन आपको कॉल किया था, उस दिन तक मेरा जो भी पढ़ा हुआ था दैट वाज इन टैटर्स, वेस्ट. लेकिन आपके साथ बात करने के बाद इमीडिएटली टेंशन तो गया सर. मैंने सब कुछ रिवाइज कर लिया था, और जो बैकलॉग भी था जो मेरे से अच्छे से नहीं हुआ था वो भी हो गया. सो माय गोल वॉज टू बी सेटिस्फाइड प्रिपरेशन वाइज, क्योंकि वही मेरे हाथ में था सर. देयर वाज नथिंग एल्स दैट आई कुड कंट्रोल, राइट. सो वो करके जाता था और मस्त मौला रहता था सर. गुड. यस, दर्शिल, थोड़ा बताओ अपने Yes, बारे sir. में. Yes, sir. So, sir, honestly, my association with you has been 10 years long, sir. I'll just give you a brief about how it started. So, I was pursuing my CA. Final, it was my first attempt, and I was finding it difficult to get a good professor for SFM. The classes that I had joined, a finance professor was not very good. And someone handed me out a flyer, and I just took your demo lectures. It used to be, I am based out of Ahmedabad, and it used to be a big screen and a demo lecture then. And then I took your SFM classes from there. And sir, honestly, my articleship was 3 years of audit, and I had no idea about finance or the financial field or equities or anything like that. So, but those concepts that I learned during CA finals, I still think of a call option as an upside betting. I don't think it is a right on this thing, but I think it is an upside betting because those concepts have stayed with me. So after taking your lectures in the finals, sir, I decided that I want to do finance. That this is the field for me. And then I decided I want to study more about finance. So my friends were joining Big Four or something like that, but I took up CFA. So I cleared my CA in 2015. November 2015. Then did CFA Level 1 in June 2016, Level 2 in June 2017. But I said, on the other hand, this was all theoretical knowledge because both CA, CFA were very theory based, fundamental based, right? Hmm. So I thought I want some practical experience, which I was never exposed to. So I did my MBA 2018 to 20. I did my MBA from NMIMS in Bombay. 2020, I was scheduled to appear for CFA Level 3. Again, I took your lectures. I was scheduled to appear, but unfortunately, COVID hit. 3 times my attempt got deferred. Then I was getting married, starting out a new job. So, and I shifted to Bombay, all of that. So, I couldn't think of giving Level 3 again. And just like Radhika, so my better half encouraged me a lot. After 2017, it was a long gap for me to appear in Feb 2024, a huge gap. So my better half encouraged me, you should go for this. And sir, honestly, between job, marriage, personal life, your lectures have been a savior. So this is just the platform that I want to convey because
what I used to do is what you used to tell in the lectures is wear those hats. So if I'm doing currency management, I would wear the hat of a currency manager. If I'm doing derivatives, I would wear the hat of a derivatives manager. So especially in level 3, where it used to happen, sir, कि asset allocation किया starting में, then I used to forget. But when I used to approach questions, I used to think like that. I used to think practically, and that really helped me, sir, level 3 especially. The other thing from which helped me a lot was not thinking it as a CA exam. वो सर अंदर से great resistance रहता है to reproduce everything that you know. But from hearing from friends and everybody, I know that paper छूट जाता है. People are not able to complete, and especially it being a computer-based exam. Initially, I was very worried whether I'll be able to at least finish my paper up or not. But listening to you repeatedly ki this is not a CA exam, this is not a BCom exam where you need to reproduce everything you know, keep it short. So sir, I think at some level that also helped a lot. Plus as Radhika, Akash both mentioned, looking at mock tests, looking at going back to answers. Matlab, you might get wrong, matlab, that is okay. While you are doing questions, you don't need to be right. You just need to be right in the exam, right? So that was something that helped a lot, sir. सर And इनफैक्ट मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। लेवल 3 में जब एग्जाम्स था ना, मैंने कुछ आंसर्स का तो सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है सर, नथिंग एल्स, कुछ नहीं लिखा मैंने। एंड मेरा पेपर सर 20-20 मिनट पहले हो जाता था, कि आपसे सुना हुआ था इट्स नॉट सीए, इट्स नॉट सीए। और सीए में तो हाल होते थे सर, लिख लिख के भी याद नहीं रहता था। बट यहाँ वो ऑलरेडी था ना सर, सो पॉजिटिव माइंडसेट रियली वर्क। और एग्जाम था ही वैसा कि यू कुड इवन राइट वन वर्ड, और एज दर्शिल सर सेड, even writing one line doesn't matter, sir. Your knowledge counts. That's it. Words are important. Keywords which you referred, that what is the gist of the concept that we need to reproduce to show the uh, examiner that yeah, we have a knowledge of that, expertise of that. या अपने को बीकॉम और अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशंस में क्या सिखाया जाता था ना, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो स्टेटमेंट को रिपीट करो, ठीक है, आंसर में उसके बाद लिखो। सो वी हैव टू अप्रोच दिस इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस, अब उसके बारे में लिखो। गॉड, बट आई रिमेम्बर मेरे क्लास 10 तक आईसीएसई बोर्ड था मेरा, दिल्ली बोर्ड, और क्लास 11-12 में फिर वेस्ट बंगाल बोर्ड था। And the way my performance dipped when I went into West Bengal board, because in Delhi board we were taught to write to the point, even sentences not required. West Bengal board में यार बोल रहा है explain the law of demand 16 नंबर में मैं law of demand क्या explain करूं, प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, और कितना बोलूं, समझ में नहीं आया। तो क्लास 11 पूरा सफरिंग, फिर 12 में कैसे न कैसे सुधरे, तब भी क्या जो हाइट्स था वहां अचीव नहीं कर पाए, बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन। तो वही सीएफए लेवल 3 में क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज चाहिए होता है, जहां स्टूडेंट को कुछ नहीं लिखना है, उसको टू द पॉइंट लिखना है, इसलिए मॉक टेस्ट बिकम मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट। मतलब आई ट्राइड अ लॉट एंड आई एम अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल टिल नाउ, कि काश लेवल 3 में जो क्यू फोरम का प्लेटफॉर्म है वैसा बनाते जिसमें मॉक टेस्ट रिटन वाले भी हो पाते। पर मॉक टेस्ट रिटन वाले में ना, आई बिलीव इफ द बेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स विद सो मेनी रिसोर्सेज लाइक आईसीएआई has failed miserably in terms of doing fair corrections. Okay, so in that case, a small institute like ours, how can they have a system जहां पे 500 जन मॉक टेस्ट देंगे एंड वो करेक्ट हो जाएगा ठीक से? तो वो रिसोर्सेज है नहीं, तो मेरे को लगता है वो सेंस भी नहीं है। बट अदरवाइज कोई ऑटोमेटेड सिस्टम होता ना जहां करेक्शन ठीक से हो पाता, तो वो मैं डेवलप नहीं कर पाया, बिकॉज आई एम नॉट ए टेक्नोलॉजी पर्सन। ओके, अदरवाइज वो मन था, इसलिए यू फाइंड दैट क्यू फोरम में कभी हम लोग लेवल 3 का मॉक टेस्ट नहीं होते, लेवल 1 लेवल 2 का ही हो पाता है। ठीक है, वी आर स्टिल एस्पायरिंग, काश कभी वो प्लेटफॉर्म खड़ा कर सके, देखा जाएगा। दर्शिल, आपसे पूछना भूल गया, व्हाट आर यू इनटू? So, sir, I am with HDFC Securities currently. I am into equity research. I cover the consumer and real estate sector with the retail research team in Ahmedabad. Consumer and Real estate sector. Yes. Okay, so your post is an equity research analyst. Yes, sir. Okay, great, because we are one of the clients of HDFC Securities only. Okay. Yeah. ठीक है, मतलब we have relationship with several wealth management firms and Right. brokerage firms. HDFC Securities is one of them. And when I tend to look at some of the
research analysts or heads, I tend to look at their qualifications just to see कितने जन का वो CFA है. तो बहुत जन तो क्या होता है CFA का फिर membership लेते नहीं है, so they can't use the tag CFA although they have cleared the CFA program. मेरे को इसमें भी लगता है ना कि लेना चाहिए membership. I'm not advocating कि CFA वाले मेरे से मिलने आए थे और बोले थे, but the thing is that कभी कभी क्या होता है अपने for the purpose of saving a small amount, say in rupee terms 10,000 20,000 जो भी लगता होगा per year का, we tend to lose out a lot, believe me. मतलब the fact that your name contains the tag, okay, speaks a lot. Number two, the fact that you are connected with the network speaks a lot. कहाँ पे एक चीज क्लिक होनी है, ठीक है, and that changes the trajectory of your life. तो मेरे को लगता है यहाँ पे अगर अपने इतना किए और अब तो मैंने in the larger scheme of things, that amount is a very like 0.5% or whatever it is of our income, which will income will obviously escalate. This will not as per inflation go up. तो मेरे को लगता है वो membership वाली चीज लेनी चाहिए. Okay, आप लोग better समझते हो, CS भी हो, ठीक है, so do take up the membership so that you can use that designation and you can also use the networking. Yes. But along with CA membership, can we take it? Yeah, you can be a member of two particular institutes. I don't know CA institute का कोई prohibition है क्या, but that would be really really surprising. As a student तो prohibition होता है, you can't do, but then बोलते हैं no, with that application you can do, और सभी जन करते हैं, तो it becomes a very confusing thing. But I'm sure any person who is a chartered accountant and a member of the CA institute is definitely allowed to be a member of any other institute also. माने 99.99% I'm sure about it. अपने जो बहुत सारे CFA मेंबरशिप बोर्ड में भी इंडिया में जो हैं, मेरे ख्याल से उनका डुअल क्वालिफिकेशन है CA plus CFA. तो आई थिंक दिस इज अलाउड. और पता कर लीजिएगा, राइट टू द CA इंस्टीट्यूट, और इवन राइट करने से गड़बड़ होगा उनको, उनमें ही चेक करना पड़ेगा गाइडलाइंस में, बिकॉज मेनी टाइम्स व्हेन यू आस्क परमिशन CA इंस्टीट्यूट विल डेफिनेटली से नो. That's the first response, like a government department that comes out. Sorry for the disrespect, sure. Anyways, it was nice interacting with you, and all the best for your bright future. And in case I am visiting Jodhpur or Mumbai or Ahmedabad, I'll definitely drop in a message to meet you, say for a coffee, so that further we can be connected. Okay? You deserve much more than that from us. No issues. So thanks a lot, and I'm really sorry because this is the only time that I have been late in a particular session. It doesn't happen. वो मेरे mind से निकल गया because वो बुद्धदित्य आया हुआ था and he was discussing that company with me. तो 7:10 my staff called me and then वो laptop अचानक से निकाल के सब इंटरनेट चालू करने में थोड़ा लेट हो गया. I'm really sorry. ठीक है? It doesn't happen with me. No worries. Sunday है, दो married people है, okay, commitment to family की तरफ. There's a lot of pain involved. Akash will obviously say no. No. Yeah, I told you, sir, from the very see actually क्या हुआ था CA फाइनल में फर्स्ट टाइम जब मैं फेल हुआ था ना सर, इट वाज बिकॉज आई गॉट 37 इन SFM, और बाद में जब वो 2 महीना आता है ना रिजल्ट के पहले का, वहां मैंने आपका क्लास लिया था. तो आई हैव बीन थ्रू फेलियर्स, और फिर वो कंसेप्ट उठाना एंड गोइंग थ्रू डिफिडेंस और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज समथिंग आई नो व्हाट हाउ बैड इट इज, हाउ disinstalling it is for you. So मैं तो आपके फेवर में हूँ सर, because I have gained much more than what you have given to me, sir. तो and sir, just to add to that, sir, I think any student that takes your classes would always be biased towards you, sir. That will definitely be there. So there's just a very small thing, because honestly, is my at least personally for me, sir, my career has been inspired with your lectures. So I think that's a very small token that we can share with you on this platform. Yes, sir. I just wanted to add one thing to what Darshil sir said. There are very many teachers in the CFA, CFA course that give out lectures for say 250 hours for level 1, or even 150, 200 hours for level 2 as well, sir. I ditched all of them and I went for 600 hours lectures because I never believed in shortcuts, sir. Degree mil bhi gaya, sir. Even if you clear the process, if you don't enjoy, then what's the use of studying, sir? That's great. I have recently met two people with very strong views in this regard. Akash, आपसे second मिल रहा हूँ. First was इस बार CA इंटर में AIR 1 मुंबई का ही बच्चा लाया, and that guy
इज मतलब उसका मन करता है ना कि उसका स्टॉक बाई कर ले अगर लिस्टेड होता तो वैसा वाला हाल है. सो इंडिया हैज अ ग्रेट फ्यूचर. वी रिप्रेजेंट द फ्यूचर एंड वी शुड ऑल स्ट्राइव बाय द इनविजिबल हैंड प्रिंसिपल, अपना अपने पैशन को फॉलो करते हुए देश का भला करें. ठीक है, Yes, sir. चलिए Definitely. मिलते Yes, हैं sir. आप लोग से फिर. थैंक यू. Sure, sir. बाय बाय. Thank you. Thank Thank you. you, sir. Bye, बाय sir. बाय.